Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and enjoying the classes. And today, again, we are in front of you with another task, and that is a description on an educational tour. And you know that educational tour are really warm welcome by the students and even the staff members. And these are great source of education and learning. So today we will discuss about the topic and let's read what how the question arises and how can we solve this question and answer. So most of the students are worried about PDFs. Sir, please send the PDFs. I am just saying that you can see in the description, all the things are written in description. You can write down in your notebook directly. I will check accordingly. सो जिन जिन को डिस्क्रिप्शन देखना आता है वो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें, आपको पूरा का पूरा टास्क उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक करें एंड डोंट वरी अबाउट पीडीएफ्स. Sometime you can miss that PDF, but on YouTube channel in description you will find all the task written and the whole description will be there as I explained you. So let's start without wasting more time. Description number third, write a description in 100 to 120 words giving description of an event on educational tour based on the hints given below. So hints are very simple: educational tour, Jaipur, Hawa Mahal, Jantar Mantar, Tripolia and museum. Third, Agra, Taj Mahal. Fourth, Delhi, Red Fort, Qutub Minar, India Gate, Birla Mandir, Gurudwara, Sisganj. And fifth, knowledge and experience. So you have to put attention on this word, that is knowledge and experience. If you have ever visited these cities like Jaipur, Agra and Delhi, then you really know all about these things. So try to write down your own description and never go after cramification. How long will you go after the cramification? Try to understand and try to write down. Grammatical portion must be neat and clean and use good diction as I have told you. So your description will look like this slide: an educational tour that must be in a paragraph, in a shape of paragraph, and there must be a heading and it must be neat and clean, and ever put attention on your handwriting, that must be neat and clean. So every day you have to write down all these things in your notebook. First you have to go through the whole chapter and try to read. So I will read for you. An educational tour, a historical tour also, is a part of our practical education. The Diwali vacation was near. We decided to go on an educational tour. We wanted to visit Jaipur, Agra and Delhi. The headmaster of our school allowed us to go. Two teachers also went with us. We hired a bus. First of all, we visited Jaipur. It is a very beautiful city. We saw Hawa Mahal, Jantar Mantar, Tripolia Market and the museum. We went to Agra. We went to the Taj Mahal. It is made of white marble. It is very beautiful. We visited some other places also. Then we went to Delhi. We visited the Red Fort, the Qutub Minar, the India Gate, the Birla Mandir, the Gurudwara, Shishganj and many other places. The tour gave us a lot of knowledge and experience. So this is how you can read it as a whole. And it is better to remember those things if you have visited. If you haven't visited, then once you have to go through all the paragraph and try to remember the words and from where to watch and how to watch. All the things are with you. Now let's explain word to word, and it is very easy to understand this chapter. An educational tour, you know very well educational tour का मतलब होगा शैक्षणिक भ्रमण. इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल एजुकेशन. देखिए आप जितना पढ़ेंगे उससे बहुत कम सीखेंगे, पर जितना आप देखेंगे, घूमेंगे, विजिट करेंगे, लगता है सबसे ज़्यादा आप उसी से सीखेंगे. तो आप ज़्यादातर घूमने की कोशिश करें. जिन चीज़ों को घूम कर के देखते हैं उनको एजुकेशन में अपनाने की कोशिश करें. द दिवाली वेकेशन वॉज नियर. हमारी जब छुट्टियां लगती है दीपावली की तो वो पास आने वाली थी. वी डिसाइडेड टू गो ऑन एन एजुकेशनल टूर. और हमने तय किया कि हम एजुकेशनल टूर पे चलें. वी वॉन्टेड टू विजिट जयपुर. और सब के सब चाहते थे कि हम जयपुर का टूर करें.
आगरा एंड दिल्ली भी इसके साथ साथ इसमें रहे। द हेडमास्टर ऑफ आवर स्कूल अलाउड अस टू गो। अब देखिए जब भी हम कोई टूर लेकर के जाते हैं, टूर पे जाते हैं तो हमें अपने पेरेंट्स से या फिर प्रिंसिपल से हमें परमिशन लेनी होती है। और यहाँ हमने ये बड़ा अच्छे से मेंशन करना है कि हमने परमिशन किन से ले ली थी, हेडमास्टर से परमिशन हमने ले ली थी। Two teachers also went with us. It is very good that teachers are going with us and with the student. They will take care of all the things and they know about the sightseeing. So they will tell you as a guide also. We hired a bus. First of all, we visited Jaipur. So there was a tour map and we started from Jaipur. It is a very beautiful city. We saw Hawa Mahal, Jantar Mantar, Tripolia Market, and the museum. So these are the names of a famous landmarks. So this is the place. These are the places to visit. And you visited Hawa Mahal, Jantar Mantar, Tripolia, and museum. Let's move to the next slide. We went to Agra. This is again a name of a city and it is very famous for Taj Mahal. We went to the Taj Mahal. हम ताजमहल में गए. It is made of white marble. ये वाइट मार्बल का बना हुआ था. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये तो सभी जानते हैं कि बहुत ही सुंदर है ताजमहल. ऐसा लगता है जैसे एक ही पत्थर से बना हुआ हो. वी विजिटेड सम अदर प्लेसेस ऑल्सो. ताज इन आगरा. हाँ, असाइलम में आप गए या नहीं गए, बट दैट इज ऑल्सो फेमस. देन वी वेंट टू दिल्ली. हम दिल्ली भी गए. वी विजिटेड द रेड फोर्ट. लाल किला घुमा. कुतुब मीनार देखी. द इंडिया गेट देखा. द बिरला मंदिर, दिस इज रियली अ फेमस अट्रैक्शन टू गो. एंड गुरुद्वारा शीशगंज एंड मेनी अदर प्लेसेस. द टूर गेव अस अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. So at last you summarize the topic, you told about the knowledge and experience, that is a good thing. So like this way you can complete your description in a task and you can achieve 10 out of 10. Your diction and your grammatical portion must be better, so it is good to practice many times. So you have to write down. लिखते समय पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यूट्यूब का जैसे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे तो नीचे पूरा का पूरा स्लाइड में नीचे हो जाएगा और आपको दिखाई देने लग जाएगा कि कितनी तैयारी आपको करनी है और आप नोटबुक में आराम से इस चीज़ को लिखें. सो इन्हीं चीज़ों के साथ थैंक्स अ लॉट. हैप्पी लर्निंग. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाइए. और जो जो अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं वो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें जब भी टाइम मिले. और आप चाहें तो इसको सेव कर लें ताकि आपका नेट इंटरनेट चार्ज बचेगा. पर टाइम जरूर देना है क्योंकि सबसे ज़्यादा आदमी सीखता है सुनने से, उसके बाद सीखता है देखने से. रीडिंग एंड राइटिंग थर्ड नंबर पे आएंगी. तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करिए और राइटिंग स्किल्स को भी बढ़ाइए क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग है. और लैंग्वेज लर्निंग के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए. सो थैंक यू वेरी मच. बाय.